Good morning, dear students. Jai Swaminarayan. Now, today we are going to start with the spelling of birds. But first, let me introduce the word. Okay? So, this is crow. Crow यानी कौवा. आप सबने देखा होगा, right? This is crow. This is peacock. This is penguin. This is owl. This is ostrich. This is parakeet. This is pigeon. This is sparrow. And this is eagle. Okay, so today is just introduction and you have to see the book in your textbook page number 27. You have to identify this word. Okay, you have to identify these birds with the picture. Okay, I'm trying to send the another video also. Okay, so you can learn more the things for the birds. Birds have two wings. Birds have two wings. हर एक बर्ड के पास टू विंग्स होती है एंड टू लेग्स होते हैं. ओके, सो बर्ड्स हैव टू विंग्स एंड टू लेग्स. टू विंग्स दिख रही है सबको? टू विंग्स, टू विंग्स, टू विंग्स. इसमें भी होती है टू विंग्स, यहाँ पे भी विंग्स होती है एंड इसमें भी होती है. देन birds have two legs. So can you see? Two legs, two legs, two legs, two legs, two legs. सब birds में two legs है, right? And birds fly in the sky. But कोई कोई जो bird होते हैं they are heavy in the body, like penguin, like peacock. Peacock can fly, but peacock cannot fly so high. And ostrich, ostrich सबसे हैवी बर्ड है. वो सबसे आपने ऑस्ट्रिच देखा है? ऑस्ट्रिच एकदम बड़ा होता है. सबसे द लार्जेस्ट बर्ड इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच पिकॉक से भी बड़ा होता है, ठीक है. और उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि इट कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता है. ओके, उसके पास टू विंग्स होती है बट इट कैन नॉट फ्लाई, बट इट इज़ अ बर्ड. क्योंकि बर्ड्स की क्या स्पेशलिटी है? टू legs and two wings. Okay, so more introduction I'll show you. Thank you. Jai Swaminarayan.